अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। एएनएन न्यूज़ से एक पहल के दूसरे शुमारे में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। मैं अमूद गुलजार आपको ये बताना चाहूँगा कि एएनएन की एक पहल मुहिम की क्या अहमियत है। हर घर से हर तलबा व तालिबात हुनरमंद हो, ये वादी कश्मीर में हमारी ये पहल रहेगी। पिछले शुमारे में हमने आपको बताया कि इस वादी कश्मीर में कितने हुनरमंद तलबा व तालिबात है। सामीन, आज हम आपको लेके चलते हैं SRM वेल्किन सोपोर, जहाँ से हम रूबरू कराएंगे वहाँ के होनहार नौनिहाल बच्चों से। आइए हम आपको लेके चलते हैं SRM वेल्किन सोपोर, जहाँ से हमारी टीम आपको रूबरू कराएगी वहाँ के होनहार बच्चों से। Assalamu alaikum, good afternoon, adab to all the viewers. This is Aksa Mustard and I welcome you all to ANN News. Talking about ANN News, it is a commercial television news network run by Aalimi News Network Pvt Ltd Corporation. It is the first and only 24/7 news channel in Kashmir, having its headquarters in Srinagar. We as a team always remain at the forefront in recognizing and identifying the talents of students across Kashmir. Keeping the track, today we are at SRM Welkin-Higher Secondary School Sopore, which is one of the renowned institutions of the valley, situated in Sopore town of district Baramulla. Point to mention that Welkin is the only school from the UT of Jammu and Kashmir which bagged first position in the field of high happiness quotient schools at the Education World Indian Schools Grand Jury ranking, and it got 10th ranking all over the country. It also received the Swachh Vidyalaya Puruskar Award with an overall scoring of 100% and with an overall rating of 5-star in all categories. We will take you along for the live overview of this school, Welkin. Let's connect to our reporter. So let's talk to Naira Ayub. Hi Naira. Right now you are present in SRM Welkin-Higher Secondary School Sopore. We want to know about Welkin. So could you please tell us the date of establishment of this school? Yes, Aksa. This is Nara Ayub from ANN News channel and I am currently here at SRM Welkin School. Let's interact with the audience. There are many students here. Let's start with this girl. Hi, what's your name? My name is Huda Jahan. Okay, so Huda, can you tell us the date of establishment of this school? Yes, the SRM Welkin School was established in the year 2000. Thank you so much, Huda. I hear it is 22 years old, but it seems like it has started its journey a century ago by looking at the progress and infrastructure. Things have changed drastically from few students to 5,000 plus on roll. Thank you, Naira. My next question to you is that can you please tell our viewers about the founder of this school? Yes, Aksa. Let's ask this question to another student. Hi, may I know your name? Assalamu alaikum, my name is Abdul Rahman. I am from grade 2. Okay, so Abdul Rahman, can you name the founder of this school? The founder of our school is Mr. Anayatullah Hajni sir. Thank you. Thank you so much, Abdul Rahman. Mr. Anayatullah Hajni sir, the chairman of this institution. I too have heard about him. He is the man with a vision. He truly provided Sopore with a landmark institution. When everyone turned materialistic, he calibrated the needs of Sopore. Back to Aksa. Thank you so much, Naira. It was really informative. Now we have one more reporter reporting from SRM Welkin-Higher Secondary School Sopore, Kurba Shaukat. So let's connect to her and know more about this school, Welkin. Hi Kurba, right now you are in SRM Welkin-Higher Secondary School Sopore. So can you please tell our viewers that what is the reason behind Welkin's establishment? I mean, why was Welkin established and what is the story behind the name SRM Welkin? Yes, Aksa, right now I'm at SRM Welkin-Higher Secondary School Sopore. And let's ask this question to one of the students. Starting from you. So, may I know your name? Assalamu alaikum, my name is Rayan. Rayan, which grade? I'm from class 9. Okay, so Rayan, do you have any idea about the establishment of this particular institution? I mean, why was SRM Welkin established?
Yeah, as far as my knowledge is concerned, this school was established to bring hope or spreading the light of modern education among the general masses of the vicinity who are otherwise considered uneducated. Okay, thank you, Ryan. So from this, we got to know the actual reason behind the establishment of SRM Welkin-Higher Secondary School, Sopore. I also feel like this institution was established to provide Sopore an institution which could cater to their educational needs, for which the Soporean students were craving desperately. And now, you might be wondering about the story behind the name SRM Welkin. So let us ask another student about this. May I know your name? Assalamu alaikum. My name is Humaira. So Humaira, which grade do you study in? I'm from grade 6. Okay, so Humaira, do you have any idea about the story behind the name SRM Welkin? Shah Rasool Memorial Welkin-Higher Secondary School, Sopore is named after its benefactor Haji Ghulam Rasool Hajini and his wife Shah Appa. SRM Welkin, where S stands for Shah, R stands for Rasool and M for Memorial. And Welkin means sky, but sky is not the limit for Welkinians. Thank you, Humaira. So from this, we got to know about the story behind the name SRM Welkin-Higher Secondary School, Sopore. This institution is named after its benefactor Haji Ghulam Rasool Hajini and Shah Appa. I too have heard about them. It was their dream to contribute such institution to the citizens of Sopore. And while talking about Welkin, as already said by Humaira, it means the sky. But you know what? After interacting with the students of Welkin, I literally feel like sky is not the limit for Welkinians. With this, I, Kurba Shaukat, would like to say goodbye to you. Over to Aksa. Dear viewers, this was our reporter Kurba Shaukat with a special report about the inception and developmental processes of a techno-based school named as Welkin. By this report, you got to know all the ins and outs of this school. Seemingly, this school is touching the heights of elegance and excellence. The news program you were watching from our ANN News channel has hopefully created positive vibes about the general scenario of a high-standard educational setup in the form of SRM Welkin. Dear viewers, we still have a lot to share with you about this beautiful garden. But time too has its wings, and to give value to the time will allow us to fly beyond the skies. The time for our program is over. Our next host, Kurat, has a bouquet of beautiful flowers to offer. Over to her. इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दवा, इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दवा, है खून फासिद के लिए तालीम मिस्ल निश्तर, है खून फासिद के लिए तालीम मिस्ल निश्तर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन किराम, मैं कुरतुलैन आपकी आज की मेज़बान SRM वेल्किन सोपोर से ANN न्यूज़ चैनल के साथ तहे दिल से आप सबका खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, आज हम सोपोर कस्बे के एक ऐसे तालीमी इदारे में मौजूद हैं जो ना सिर्फ वादी कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मशहूर व मारूफ है। हालांकि ये इदारा पहले तो सोपोर कस्बे में वाक़ा होने की वजह से जाना जाता था, पर आप सबको ये जानकर ताज्जुब होगा कि आज सोपोर इस इदारे के यहाँ वाक़ा होने की वजह से जाना जाता है। ये स्कूल अपनी इब्तिदा ही से निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में दीगर तमाम तालीमी इदारों से उम्दा और आला नताइज सामने लाता रहा है। ये स्कूल न सिर्फ तालीम की बिना पर मशहूर है बल्कि खेल कूद और साफ सफाई के हवाले से भी पूरे जम्मू व कश्मीर में अव्वल दर्जे पर आता है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं शाह रसूल मेमोरियल वेल्किन हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर की। तो चलिए, इस स्कूल ने शुरू से लेकर आज तक क्या क्या एजाज़ात अपने नाम किए और इसके क्या इम्तियाज़ात हैं जिनकी बिना पर ये दीगर तमाम तालीमी इदारों से मुख्तलिफ और मुमताज़ हैं, जानने की कोशिश करते हैं हमारे नुमाइंदे सदाकत कासिम के साथ। जी सदाकत। जी कुरतुलैन, पहले तो मैं अपनी तरफ से तमाम नाजरीन को सलाम पेश करना चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
आप जानते हैं कि वादी कश्मीर खास तौर पर शुमाली कश्मीर में पिछले 20 बरसों के दौरान वेल्किन स्कूल ने मियावरी तालीम के फ़रोग के लिए किस कदर कोशिशें की है। इसका सबूत यहाँ से फारिग हुए तलबा जो कि मुल्क और बैरून मुल्क अपनी काबिलियत और जहानत का नोहा मनवा रहे हैं। इसके अलावा वादी कश्मीर और इससे बाहर जो भी निसाबी और गैर निसाबी मुकाबले मुनक्किद किए गए उस सब में वेल्किन ने अहम मुकाम हासिल किया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में वेल्किन स्कूल ने मुल्की सतह पर 10वीं और जम्मू और कश्मीर में पहली पोजीशन हासिल की। जी हाँ नाजरीन, और इससे पहले भी कई इनामात जैसे नीसा और गीसा एजाज़ात काबिल ज़िक्र है। इस बीच हमारे साथ एक तालिबा मौजूद है, आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपने स्कूल के एजाज़ात के बारे में क्या जानती है। जी अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मदिहा मुदस्सिर है और मैं 6ठी जमात में पढ़ती हूँ। जी मदिहा, आप अपने स्कूल के एजाज़ात के बारे में क्या कुछ जानती है? जी यूँ तो हमारे स्कूल को बहुत से इनामों से नवाजा गया है, लेकिन जिन बड़े बड़े एजाज़ात का मैं जिक्र करना चाहूँगी जैसे गीसा और नीसा के अलावा हाल ही में हमारे स्कूल को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार और जंगीर कार्निवल जैसे इनामों से नवाजा गया है। बहुत खूब। जी कुरत, जैसा कि आप सुन सकती है कि वेल्किन स्कूल को हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से भी नवाजा गया, जो अपने आप में फख्र की बात है। इसी के साथ वेल्किन स्कूल में ANN न्यूज़ के साथ मैं सदाकत कासिम। आपका बहुत शुक्रिया सदाकत कि आपने इस स्कूल के बारे में हमें काफ़ी मालूमात फराहम की। नाजरीन, सदाकत की रिपोर्ट में हमें जितना कुछ जानने को मिला इससे इतना तो जाहिर होता ही है कि वाकई SRM वेल्किन एक बुलंद दर्जा रखने वाला इदारा है। नाजरीन, अब तक हमने जाना शाह रसूल मेमोरियल वेल्किन के एजाज़ात के बारे में, और अब इस बीच हमारे साथ हमारी एक और रिपोर्टर ताबान मौजूद हैं जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि इन सब एजाज़ात के बाद ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ हैं जो यहाँ के तलबा ने महसूस की और इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी कुरतुलैन, जैसा कि आपने अभी सुना, वेल्किन स्कूल सोपोर अपनी नौयत का पहला इदारा है जहां पर इतना उम्दा और आला इंफ्रास्ट्रक्चर है और तमाम जदीद तरीन तालीमी सहूलियत मैसर है, जैसे ATL के अलावा ऑडिटोरियम, MP हॉल और एक बहुत बड़ा कुतुब खाना है। और अगर हम बात करें कि यहाँ कौन कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं तो रिवायती मज़ामीन के साथ साथ कोडिंग, कंप्यूटर के अलावा GK और थियोलॉजी वगैरह मज़ामीन भी पढ़ाए जाते हैं। इस बीच हमारे सामने एक छोटा सा बच्चा मौजूद है, चलिए उनसे पूछते हैं कि वो अपने स्कूल के बारे में क्या बताते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियान हसन है। आप किस जमात में पढ़ते हैं? मैं 4ठी जमात में पढ़ता हूँ। तो आप हमें अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए। मेरा स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है और ये मशहूर है। ये 7 इमारतों पर मुश्तमिल है जिनके नाम गनी ब्लॉक, बशीर ब्लॉक, सलीमा ब्लॉक वगैरह वगैरह है। ये हिंदुस्तान में 10वें नंबर पर और जम्मू और कश्मीर में पहले नंबर पर आता है। शुक्रिया। तो हम वापस स्टूडियो चलते हैं अपनी एंकर कुरतुलैन के पास। बहुत खूब ताबान। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट शाह रसूल मेमोरियल वेल्किन-हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर के हवाले से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके दीगर सवालात जैसे कि आखिर क्या खासियत है SRM वेल्किन में, किस चीज़ की बिना पर SRM वेल्किन दीगर तमाम तालीमी इदारों से मुख्तलिफ है, और SRM वेल्किन को आखिर क्यों पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इज्जत की निगाहों से देखा जाता है, कि जवाबात मिल गए होंगे। अब मैं आप सब नाजरीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमें अपना कीमती वक्त देकर हमारी हौसला अफजाई की। इसके साथ ही मैं आप सब से रुखसत लेना चाहूँगी एक मशहूर कौल के साथ। ज़रूरत नहीं है गफलत और जहालत के अंधेरे को कोसने की, नादान इल्म की शम्मा जला कर तो देखो। आखिर में मैं अपनी दूसरी मेज़बान दोस्त उर्वीन से गुजारिश करना चाहूँगी कि वो अब आगे हमारे इस प्रोग्राम के सिलसिले को कश्मीरी ज़ुबान में आगे बढ़ाए। अब दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त, वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, उम्मीद से जति सारी अस्यू वारवत बशस्तंज मेज़बान उर्वीन आरिफ ANN न्यूज़ पे तय वच खर मकदम करान। नाजरीन, आज करो शुमाली कशीर हिंदिस अकिस नामावार स्कूलस मुतल्लिकात यात नाव छु SRM वेल्किन-हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर। नाजरीन, तालीम हज अहमियत अफादियत निशन कंस अकिस इनकार। सनिस दौरस मज बुनियादी ज़रूरतों मज तालीम हासिल करें ताक बुनियादी ज़रूरत। शेखुल आलम रहमतुल्लाह आलम फरमोमत इल्म संदूक सुन जन बरन। इथे पे वारियों दानश्वरों विज विज तालीम हज अहमियत वसनमज।
ناظرین یہ کت تاکار علم سچ دانائی تو دانائی سچ سون ان پک مشکان یوان تو سن نو پوچھ نئی نئی تجربہ کرت لکن مختلف سہولیات فراہم کران. ناظرین سون رپورٹر وکینس SRM Welkin ہائر سیکنڈری سکول سوپورس مز موجود اس زانکاری دی کم کم ایکٹیویٹی ات سکولس مز گھان شرن ہند ٹیلنٹ دہ کھو دہ برہ کن. السلام علیکم خوشبو. وعلیکم السلام اروین بس خوشبو سمیر ANN نیوز چینل پہ ونکس SRM Welkin سکولس میں موجود. اروین ولے اس کرو یت کن طالب علمن ست کت زِ یت کم کم ایکٹیویٹی منعقد سپدان. ونکن اس نش اخ لکوٹ مکوٹ بچہ ولے اس کرو امن ست کت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تہ کیا چھو ناو؟ میں ناو برہان مسعودی. اچھا برہان تُہۍ کٔژمہِ جمٲژ چھِو پران؟ بہٕ حظ چھُس 3مہِ جمٲژ پران. برہان تُہۍ ؤنِو اَسہِ زِ تُہنٛدِس سکوٗلس منٛز کم کم ایکٹیویٹی چھِ منعقد سپدان؟ سٲنِس سکوٗلس منٛز چھِ واریاہ ایکٹیویٹی گژھان خاص کر سیمینار گژھان پینٹنگ گژھان کویز گژھان ڈِبیٹ گژھان بیٚیہِ تہِ واریاہ ایکٹیویٹی چھِ گژھان. شُکریہ برہان. اروین یتھ کٔنۍ تۄہہِ بوٗزوٕ زِ یتھ سکوٗلس منٛز چھِ مختلف ایکٹیویٹی گژھان یتھ منٛز ڈِبیٹ کویز کانفرنسز تہٕ سیمینار بیترِ چھِ. آو اروین. شکریہ خوشبو. ناظرین ون تت حیا سہ دی اس مزید جانکاری ام حوالہ. حیا السلام علیکم. وعلیکم السلام اروین. یت پٲٹھۍ میانہِ زانکٲری ہُنٛد تعلق چھُ یتھ ادارس منٛز یم تہِ پروگرام منعقد سپدان چھِ امہِ خٲطرٕ چھِ سکوٗل انتظامیہن اکھ MP ہال بیٚیہِ حالٕے چھُ اکھ آڈیٹوریم تہِ بناونہٕ آمُت. ؤلِو أسۍ کرو ییٚتہِ کٮ۪ن بچن سۭتۍ مزید کتھ تہٕ وٕچھو زِ یِم ایکٹیویٹی کرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ تبدیٖلی چھِ بچن منٛز لبنہٕ یِوان. تُہُنٛد ناو کیٛاہ حظ چھُ؟ مےٚ چھُ ناو سُہانا. تُہۍ کٔژمہِ جمٲژ چھِو پران؟ بہٕ چھَس 9مہِ جمٲژ پران. اچھا سُہانا تُہۍ ؤنِو اَسہِ زِ یِم ایکٹیویٹی کرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ کیٛاہ تبدیٖلی چھُو تۄہہِ شُرٮ۪ن منٛز لبنہٕ یِوان؟ جی حیا تعلیم سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِمو پروگرامو سۭتۍ بچن اندر مختلف صلٲحیت پٲدٕ گٔژھِتھ تہنٛدِس ذہنس وسعت میلان تہٕ واریاہ بچہٕ یِمن برونٛہہ کُن یِنس منٛز کانٛہہ تہِ مُشکلات چھِ گژھان تِم تہِ چھِ باقٕے بچو نِش مُتٲثر گٔژھِتھ برونٛہہ کُن یِوان. بڑٕ شوٗبوُن تہٕ لوٗبوُن جواب دِتوٗ تۄہہِ. وۄنۍ پکو أسۍ واپس سٹوڈیو. جی اروینا. شکریہ حیا مزید جانکاری دن خاطر. ناظرین تُہۍ وٕچھِو زِ SRM Welkin چھُ سُہ اکھ ادارٕ یُس لگ بگ سُہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کوٗشش چھِ کران ییٚمہِ سۭتۍ شُرٮ۪ن ہُنٛد ٹیلنٹ یا ہُنر برونٛہہ کُن چھُ یِوان. ناظرین سون پروگرامُک وقت ہیوٚتُن اند واتُن تہٕ دِیِو اجازت. السلام علیکم. Good afternoon and assalamu alaikum to all of you. It's me Muhammad Salim Rawa live from ANN News. So today we have gathered for a discussion. Today our topic is education, the gateway to peace and prosperity. So education is a process of facilitating learning or acquisition of knowledge, values, skills, beliefs and habits. Educational method includes teaching, training, storytelling, discussions, etc. In most of the regions, education is compulsory up to a certain age. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So today, I have with me Master Ahmed, Ms. Daneen, and Ms. Zainab. To begin with, I would like to know it from Master Ahmed about his take on the importance of education. So, thank you, Salim. Talking about the importance of education. In the society of nowadays, respect is given to the only ones who are educated, not to the illiterates, as it is the most essential part of the society. Talking about the world, rather the rolling countries, these fights can lead to the loss of employment. But if someone is educated, he can get a new job, start a new life by this lifesaver that is education. Education enhances our acumen, ability, consciousness and the intellectuality. In order for the world to really become equal, it needs to start with education. As it's rightly said, if there is education, there is equality. Now Ms. Daneen, you say, is education important for the youth only? Thank you, Mr. Salim, for allowing me to speak. So my opinion on this thing is no. Education is not only important for the youth. Education should be provided to everyone in this world. Everyone deserves to be educated. Look, there are two things, literation and education. Literation means to learn how to read and write. While as education not only includes that, it also includes moral education. Ethics, values, way of behaving, the way it teaches us how to respect our elders, etc. Without education, this world will lead to great imbalance. So everyone in this world should be provided with proper education.
Thank you. Ms. Zainab, does our country have a good educational system? What are its strengths and weaknesses? Well, thank you, Salim, and I'm really grateful to you for providing me with this opportunity to represent my opinions here. Well, in my opinion, and we already know that Indian education system focuses more on theories rather than practical knowledge. India already has the world's largest higher education system with over 1,000 universities, and its presence in the global education arena ensures that it reaches new heights in future, making education in India one of the best things for school-going children and the youth. Well, also on the other hand, if we talk about the Indian education system, it does not allow creativity as such. While talking about the strengths that I earlier mentioned in the first part of my perception, my perspective, now let's have a look over the other side of the coin. Specifically the demerits, the cons, the disadvantages that are present in the country's education system and that shouldn't be there. Now let's have an example of the youth nowadays. Most of the people nowadays are well educated. They have a great caliber, intellect, enthusiasm, determination, dedication and what not to their goal, but are still unemployed. The question which is arising here in the society is, if we are getting the real education, then why isn't the youth employed? Why are they unemployed? Why aren't they provided with those opportunities which they deserve? As the regime is failing here, the administration is lagging behind. As all of the youth, the individuals nowadays are lagging behind, as the government cannot approach them and also not provide them with good job opportunities. Thank you. Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. And anyone who keeps learning stays young. So Ms. Dani, do you agree with the statement? If yes, why? And if no, again why? So, Mr. Salim, actually I do agree on this statement. Anyone who stops learning gets old, not by age, but mentally. So, anyone who stops learning usually has a narrow mind, is not open to new thoughts and ideas. Its connections gets cut off from the society. He does not know how to interact with this generation. While as a person who does not stop learning is always open-minded, has a fresh mind, can act like missionaries for the society. So we should not stop learning even if we get old. We should learn throughout our lives. Thank you. After the implementation of Western education in India, why Mahatma Gandhi opposed it and wanted the children to learn handicraft skills and have some life experience. So, Master Ahmed, you please share your opinion. Well, from my perspective, according to Mahatma Gandhi, Western education created the sense of inferiority among the Indians and the Indian teaching. His mind picture was that if the Indians would study in their mother tongue, it would get elementary for them to grow, develop, evolve and succeed, and they would become proficient at the operation, manipulation and the management of certain things. Ms. Zainab, in one's own country, which language one should favor, mother tongue or foreign? Well, in my opinion, Mr. Salim, if I talk about the foreign languages, it helps us to make connections, interactions, and boosts our communication skills with people of different nations, cultures, customs, traditions, heritages, and particularly languages. Well, if I talk about the foreign language, which has become the medium of education in our country, is English. Well, talking about English, as is wisely said, then English is a bridge. It has become a medium, a bridge on anyone could travel on. As is wisely said, that English, the language English, it is the window to the world, as rightly said by Jawaharlal Nehru. So, Ms. Zainab, I have a point to ask here. Can't we develop our own mother tongue in replacement of foreign languages? Well, at this, I must also conclude, Ms. Daneen, that mother tongue is that kind of language of a person. That language, and it also keeps a person intact to his or her land, to his origin, to his roots, while he was actually born. Now let's have a look at the countries which have kept their regional languages as their official one. That is their mother tongue. Like, have an example of Japan, China. Well, China hasn't had an edge for the last 30 years in the education system. And Japan has also boosted its education system, and its 3 universities are being added up to the top 100 universities list
of the whole world. And also here I must also conclude, as you asked me the question here, that can we replace the foreign language with our mother tongue? Yes, absolutely. Undoubtedly our country will flourish. But how come are we going to actually represent ourselves in front of the world? Prove them that how our culture, our tradition is best. Thank you. Ms. Daneen, please throw some light on moral education. Of course. So as I mentioned earlier, moral education is a part of education. It includes ethics, values, way of behaving, etc. You know, how do we make new relationships? We make new relationships by joining our personality to others. And nobody likes a person without good manners. You know, there are many issues in this world like caste discrimination, gender discrimination, racism. We need to end these things. A lot of teenagers nowadays face depression and anxiety due to cyberbullying because the cyber bullies do not know what is moral education. We need to spread moral education to make this world a better place. Without moral education, without this education, this world would be a mess. Master Ahmed, what is the role of your school in providing education? Well, in the small town of Sopore, where the word, rather the ultimate fantasy, quality education wasn't fulfilled. But in 2000s, this school came with absolute love, hope and excellence. The dream was fulfilled and this school proved the power of education by providing standard education. This school, which now is one of the best schools in India and the best in the territory. Thank you. So now our discussion is over. I would like to thank Master Ahmed, Ms. Daneen and Ms. Zainab for their great inputs. And thanks for watching ANN News Channel. मोहतरम नाजरीन, मैं गजाला दिलावर SRM वेल्किन स्कूल सोपोर से ANN न्यूज़ चैनल के साथ आप सबको पुरखलूस सलाम पेश करती हूँ। नाजरीन, हम सब जानते हैं कि हम तेज़ रफ्तार दौर में सांस ले रहे हैं। ज़िंदगी के तकरीबन तमाम शोबों में तरक्की हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ नए मसाइल और नए चैलेंज का भी सामना करना पड़ता है। इन मसाइल में रोड सेफ्टी सरफहरिस्त है, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन हमारी सड़कों पर आए रोज़ मौत रक्सा रहती है और सड़कें रंगीन। नाजरीन, हम सब सड़क का इस्तेमाल करते हैं। सड़क एक रफ़ाए आमा है जो हर एक के लिए होती है। पैदल और गाड़ी सवार हर कोई शख्स सड़क का इस्तेमाल करता है। जहाँ तक वादी कश्मीर की सड़कों का ताल्लुक है, वो भी या तो हुकूमत की लापरवाही या तो हमारी अपनी किस्मत की देन से ख़राब हैं। वो कुशादा नहीं है और ट्रैफिक के दबाव की वजह से वो और भी ज़्यादा खस्ता हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। नाजरीन, इसी मुनासिबत से आज हमारे दरमियान कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जो हमें रोड सेफ्टी के हवाले से अपने ज़रीन मशवरों से नवाजेंगे। जी, सबसे पहले हम तैयबा आसिफ से जानना चाहेंगे कि सोपोर में बढ़ती हुई मुश्किलात का जायज़ा लेकर उनके क्या ख्यालात हैं। जी तैयबा आसिफ। जी गज़ाला, मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस मौजू पर बोलने के लिए वक्त दिया। अगर हम बात करें सड़कों की तो अक्सर जगहों पर उनकी हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है। इन सड़कों पर जगह जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिनमें जमा गंदा पानी न सिर्फ गाड़ियों बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी बाइस अजाब बन चुका है। बारिश के अयाम में ये सड़कें कई जगहों पर झील की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से अवाम खसूसन बुजुर्गों और बच्चों को इन सड़कों को पार करने में इंतहाई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इन सड़कों की कुशादगी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम होता रहता है। अगरचे आर्जी तौर इन सड़कों की मरम्मत की जाती है, ताहम इस आर्जी मरम्मत से मकामी लोगों की मुश्किलात में कमी वाक़या नहीं होती। सड़कों की खस्ता हाली के सबब ड्रेनेज सिस्टम में मुतासर हो चुका है। जगह जगह नालियों और ड्रेन्स का पानी सड़कों पर जमा हो रहा है, जिससे उठने वाली बदबू मकामी रहायशों के लिए बाइस अजाब बन चुका है। मुसाफिरों को भी सड़कों पर चलने में दिक्कत होती है। यहाँ के इंतजामिया भी इन सड़कों को नजरअंदाज कर रही है। जी तैयबा, आपने इंतजामिया की बात की, किस लिहाज से आपको लगता है कि इंतजामिया हमारी इन सड़कों को नजरअंदाज कर रही है? जी गजाला, हमारी सड़कें इतनी कुशादा नहीं है जितना वक्त का तकाजा है। वेल्किन स्कूल से डिग्री कॉलेज सोपोर तक जाने में तकरीबन 1 घंटा सर्फ हो जाता है, जो कि सिर्फ 5 मिनट का सफर है।
स्कूल के बच्चे भी स्कूल देर से पहुंच जाते हैं। एक एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है, जिससे मरीजों को भी काफी दुश्वारियां दरपेश आती है। हर इंसान का वक्त कीमती है और हुकूमत को इसके बारे में इकदाम उठाने जरूरी है ताकि यहाँ के अवाम को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी तैयबा, आपका बहुत नाजरीन, इस प्रोग्राम पर और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे और एक मेहमान जी तादीना, आप हमें बताइए कि किस तरह के मेजर्स हमें अपनाने चाहिए जिनसे हम ट्रैफिक से बच सकें। किस तरह से आप लोगों को बढ़ती हुई मुश्किलात से आगाह करेंगे? देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी गजाला, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस मौजू पर अपनी राय कायम करने के लिए वक्त फराहम किया। देखिए, जहाँ तक ट्रैफिक अजदहाम का ताल्लुक है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि लोग दिन ब दिन ट्रैफिक अजदहाम की वजह से मुश्किलात में फंस जाते हैं। इस ज़िमन में हुकूमती सतह पर और अवामी सतह पर आम बेदारी मुहिम चलानी चाहिए। वर्कशॉप्स, सेमिनार्स का एहतमाम करना चाहिए। जी हाँ तादीना, हुकूमत क्या इंतजाम कर रही है इस हवाले से? जी गजाला, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, अजदहाम को काबू करने के लिए हुकूमत ने लाइट्स के जरिए एक ऐसा निज़ाम बनाया है जिसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं जिसको इनके बारे में मालूमात है। अब आम लोगों को भी इस जुमरे में लाने की कोशिश करनी होगी ताकि लोग भी राहत की सांस ले सके। जैसे हरी बत्ती आगे बढ़ने का इशारा करती है, पीली बत्ती धीमी रफ्तार को बताती है, जबकि लाल बत्ती रुक जाने का इशारा करती है। लाइट्स के इशारात ही दरअसल पूरे अजदहाम को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा जरिया है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करना, सीट बेल्ट वगैरह का पाबंद रहना, साइन बोर्ड्स को फॉलो करना वगैरह। हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर रफ़ाए आमा के लिए पैसेंजर शेड्स तामीर करने चाहिए। बाज़ाब्ता तौर पर कार पार्किंग के लिए जगह का तयन करना चाहिए ताकि लोग भी राहत की सांस ले सके। अजदाम तो हर वक्त मुख्तलिफ अवकात रहता है जिससे लोगों का वक्त ज़ाया होता है। 5 मिनट के सफ़र की जगह 1 घंटा लगता है। इस सिलसिले में अमली इक़दामात उठाने चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी दोभर न हो। रफ्तार महदूद यानी कि स्पीड लिमिट के बोर्ड नस्ब किए जाने चाहिए। चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस तैनात की जानी चाहिए। नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर ममानत होनी चाहिए। जी तादीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस मौजू पर और बात करने के लिए हमारे साथ और एक मेहमान हमारे मौजूद हैं। जी सलमान, आप हमें बताइए कि SRM वेल्किन की तरफ से ट्रैफिक निज़ाम में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? जी गजाला, मेरी बाँछें खिल गई कि आपने मुझे इस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। ट्रैफिक निज़ाम और अजदहाम के मुतालिक जहाँ तक SRM वेल्किन के अमली इक़दामात का ताल्लुक है, हमारा स्कूल ऐसे प्रोग्रामों, वर्कशॉप्स का इनेकाद करता रहता है जिसमें बच्चों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही हासिल हो। बच्चों की रैलीज निकाली जाती है जिसमें गाड़ियों को रोककर ड्राइवरों से सीट बेल्ट के बारे में पूछा जाता है। 2 पहिया चलाने वालों को हेलमेट के फ़ायदों से वाकिफ़ कराया जाता है। चूँकि SRM वेल्किन वादी का एक मायानाज इदारा है, स्कूल की 80 से ज़ायद निजी गाड़ियाँ हैं। ट्रैफिक दबाव को काबू में रखने के लिए स्कूल ने 3 तरफा रास्तों का निफाज अमल में लाया है और मुस्तकबिल में भी SRM वेल्किन ऐसे ही स्टेप्स और मेजर्स लेता रहेगा जिससे ट्रैफिक मसाइल से हमें छुटकारा मिले। जी सलमान, वक्त की कमी के बायस आपसे माजरत चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये बेहद मुफीद मुबाहिसा रोड सेफ्टी के हवाले से था। इस मुबाहिसे में कई चैलेंज और मसाइल के अलावा अरबाब इक़्तिदार की जिम्मेदारियों का भी अहाता किया गया। नाजरीन, आप भी हमें अपने फरू से नवाजिए और हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। नाजरीन, बचस तंज मेज़बान मीर हादिया आशिक SRM Welkin-Higher सेकेंडरी स्कूल सोपोरिश तालिबा ANN न्यूज़ पे। नाजरीन, बचस तुंद खैर मकदम करान यथ प्रोग्रामस मज युस जन ANN न्यूज़ चैनल हंद मुनक्कद करना।
ناظرین تۄہہِ سارنٕے آسیو پتہ زِ سٲنۍ کٔشیٖر چھِ درُس دُنیاہس تہٕ پوٗرٕ عالمس منٛز سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر. ییٚتِکۍ آبشار ون سرسبز باغ تہٕ سرسبز مٲدان چھِ ییٚمہِ کِس حُسنس منٛز ہُرٮ۪ر کران. ہاں جی بالکل ناظریٖن آز کرو أسۍ کتھ سٲنۍ موج کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ تہٕ اَسہِ سۭتۍ چھِ آز کینٛہہ مہمان بہٕ کرناو تۄہہِ اُہُنٛد تعارُف تہٕ أسۍ وٕچھو أہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ کٔشیٖرِ مُتعلق. تہٕ سٲنۍ گۄڈنِچ مہمان چھِ خوشبوٗ اختر. خوشبوٗ جی چھِ ہندوارٕچ روزن واجی. سٲنۍ دوٚیِم مہمان چھِ ہِبت خالد. ہِبت جی چھِ سوپورٕچ روزن واجی. تہٕ سٲنۍ ترٛیٚیِم تہٕ ٲخری مہمان چھِ زہرا جاوید تہٕ زہرا جی تہِ چھِ سوپورٕچ روزن واجی. ناظریٖن ؤلِو أسۍ کرو کتھ پننِس گۄڈنِکِس مہمانس یعنی خوشبوٗ جی سۭتۍ. خوشبوٗ جی تُہۍ ؤنۍتو تٕہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ یتھ کٔشیٖرِ مُتعلق؟ السلام علیکم. بہٕ چھَس تُہٕنٛز سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار زِ تۄہہِ دِتوٗ مےٚ یَتھ خاص موضوٗعس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ راے برونٛہہ کُن تھاونُک موقعہٕ. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ زن سٲری زانان ٲسِو یُس کٔشیٖر چھِ یہِ چھِ پِروٲر ناوٕ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر تہٕ یتھ منٛز چھِ وقتہٕ وقتہٕ تھٔدۍ دیٖنی بُزرگ یِتھ پٲٹھۍ شیخ العالم مخدوٗم صٲب ہی اہم شخصیت شٲمِل چھُ. واریاہ بہتر تہٕ واریاہ جان خوشبوٗ جی. بہٕ یِمہٕ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تۄہہِ کُن گۄڈٕ پھیرٕ بہٕ پنٛنِس دوٚیمِس مہمانس یعنی ہِبت خالد. ہِبت جی تُہۍ ؤنۍتو سانٮ۪ن ناظریٖنن تٕہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ یتھ رِشوارِ مُتعلق؟ السلام علیکم. یِتھ پٲٹھۍ زن خوشبوٗ جی فرمو زِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ تھٔدۍ بٔڑۍ عٲلِم ؤتھمٕتۍ تہٕ بہٕ چھَس أمۍ سٕنٛز اَتھ راے سۭتۍ پوٗرٕ اعتفاق تھاوان. مٔزیٖد چھَس وَنُن یژھان زِ سانہِ کٔشیٖر چھِ اللہ تعالیٰ ہن سٮ۪ٹھاہ نعمژو سۭتۍ تہِ نوٲزمٕژ یِتھ پٲٹھۍ ییٚتیُک مٮ۪وٕ چھُ یُس درُس دُنیاہس منٛز سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر چھُ. واریاہ اصٕل تہٕ واریاہ جان ہِبت جی. وۄنۍ پھیرو أسۍ پنٛنِس ترٛیٚیمِس مہمانس یعنی زہرا جی کُن. زہرا جی تُہۍ ؤنۍتو سانٮ۪ن ناظریٖنن تہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس کلچر کِس بارس منٛز کینٛہہ. شُکریہ. اگر أسۍ کٲشرِس کلچر کِس بارس منٛز کتھ کرو أسۍ ہٮ۪کو وٕچھِتھ زِ کانٛگٕر چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس کلچرُک اکھ نوٚن ثبوٗت. بیٚیہِ اگر أسۍ کتھ کرو کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس پوشاک کِس بارس منٛز تہٕ پھٮ۪رن چھِ کٔشیٖرِ ہُنٛد اکھ واریاہ اہم پوشاک. اَمہِ علاوٕ چھُ پشمیٖن شال سٲرسٕے عالمس منٛز واریاہ مشہوٗر تہٕ یہِ چھِ حُسنس ہُرٮ۪ر کران. شُکریہ زہرا. وۄنۍ یِمو أسۍ بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ پنٛنِس گۄڈنِکِس مہمانس یعنی خوشبوٗ جی کُن. خوشبوٗ جی تُہۍ ؤنۍتو کٔشیٖرِ ہُنٛد سُہ کھٮ۪ن چٮ۪ن یُس زن درُس دُنیاہس منٛز سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر چھُ تہٕ سُہ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ لُکھ تہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ پسنٛد کران کھیوٚن. یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ زن سٲری زانان ٲسِو یُس کٲشُر وازوان چھُ سُہ چھُ درُس دُنیاہس منٛز مشہوٗر یتھ منٛز واریاہ قٕسمٕکۍ سِنۍ رننہٕ چھِ یِوان یِتھ پٲٹھۍ رِستہٕ گۄشتاب تبکھ ماز بیترِ شٲمِل چھِ. وۄنۍ زن اگر أسۍ مشروٗبن ہٕنٛز کتھ کرو کٲشِر گُلٲبۍ چاے تہٕ کٲشُر زعفران قہوٕ چھِ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٲشُر چھُ یِمن چیوٚن پسنٛد کران. واریاہ بہتر خوشبوٗ جی. وۄنۍ پھیرو أسۍ پنٛنِس دوٚیمِس مہمانس یعنی ہِبت جی کُن. ہِبت جی تُہۍ ؤنۍتو کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس تِمن عمارتن تہٕ تِمن جاین ہٕنٛز ناو یِم زن کٔشیٖرِ ہٕنٛز خوٗبصوٗرتی منٛز ہُرٮ۪ر چھِ کران. کٔشیٖرِ منٛز چھِ واریاہ یِم جایہِ یِم سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت تہٕ مشہوٗر چھِ یِمو منٛز گُلمرگ سۄنمرگ پہلگام بیترِ شٲمِل چھِ. بیٚیہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز خوٗبصوٗرتی منٛز ہُرٮ۪ر کرنہٕ خٲطرٕ چھِ واریاہ عمارتہٕ تہِ تعمیٖر کرنہٕ آمٕژ یتھ منٛز پانڈولر پری محل بیترِ شٲمِل چھِ. واریاہ اصٕل تہٕ واریاہ جان. وۄنۍ پھیرو أسۍ پنُن ٲخری سوال ہٮ۪تھ پنٛنِس ٲخری مہمانس یعنی زہرا جی کُن. زہرا جی تُہۍ ؤنۍتو سانٮ۪ن ناظریٖنن کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس ادبس مُتعلق کینٛہہ. یوتامتھ سانہِ کٲشرِس ادبُک تعلُق یی ییٚتہِ چھِ وقتہٕ وقتہٕ تھٔدۍ پایِکۍ لِکھٲرۍ ؤتھمٕتۍ یِمو منٛز شیخ العالم حبہٕ خاتوٗن لل دٮ۪د بیترِ شٲمِل چھِ. اَمہِ علاوٕ چھُ بیٚیہِ تہِ واریاہو لِکھٲرو سٲنِس کٲشرِس ادبس واریاہ لول بوٚرمُت. شُکریہ زہرا جی. ناظریٖن تۄہہِ وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ کوٚر سانیو مہمانو بیون طٔریٖقو کٔشیٖرِ ہٕنٛز خوٗبصوٗرتی ییٚتیُک کلچر تہٕ کٔرٕکھ کٲشِر زبانہِ ہٕنٛز وٮ۪ستار ژھان وٮ۪سنَے. ناظریٖن مےٚ چھِ وُمید زِ تۄہہِ آسیو سٲنۍ یہِ کوٗشِش ٹارِ کھٔژمٕژ تہٕ یتھ پروگرامس ووت ییٚتی انٛد. وۄنۍ دِیِو اَسہِ اِجازت. السلام علیکم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Daha Peer. And I am Ahmed bin Ijaz and we both are from grade 7. Today we are here to host a quiz program regarding IT, information technology. But before starting that,
let's know what IT actually means. IT is a broad professional category covering functions including building communication networks and much more. And in day-to-day life, we need IT for many things, whether it be faster communication or to provide electronic storage and much more. So now, let's introduce our teams. We have 4 teams with us. Team A, Ariba and Mohammad Salah. Team B, Habib and Sumayya. Team C, Shoaib and Mahin. And Team D, Faraz and Hijab. And it looks like all the 4 teams are here with full enthusiasm and hope. But before we begin, let's know about the rules first. The rules are very simple. You'll be asked 2 questions each, but you have to answer the question within 30 seconds. So, is everyone ready? So, best of luck to each one of you. Let's begin with our round first. So, the first question of round 1 goes to Team A. Are you ready? Yes. Here's the question. Who is the first programmer? And here are the options. Option A, Ada Lovelace. Option B, Elon Musk. Option C, Ken Thompson. And option D, Charles Babbage. And your time starts now. You have to be quick. It's option A, Ada Lovelace. Would you want to lock it? Yes. So let's see. Yes, you're absolutely right. It's Ada Lovelace. She was a mathematician as well as a writer, and she was the one who introduced coding to the world. Now let's move towards Team B. Are you ready? Yes. So here's the question. Which of the following is a web browser? And here are the options. Option A, Hotmail. Option B, MS Word. Option C, MS Office. Or option D, Chrome. And the time starts now. You have to be quick. Please lock option D, Chrome. Are you sure? Yes. Is it the final answer? Yes. Okay, so let's see. Yes, you're absolutely right. It's option D, Chrome. So Chrome was first released in 2008 by Google for Microsoft Windows, and it is said to be the fastest web browser. So now the next question goes to Team C, and here's the question. Where is the headquarters of Microsoft Office located? I repeat, where is the headquarters of Microsoft Office located? And here are the options. Option A, Canada. Option B, USA. Option C, France. And option D, Australia. And your time starts now. Option B, 20 seconds left. Are you sure? Yes. So let's check. Yes, you are right. You are absolutely right. It's USA. In USA, it's at Redmond, Washington. Now the fourth and the last question of this round goes to Team D. So here's the question. GIF is an extension of. Your options are A, image file, B, video file, C, audio file, or D, word file. And the time starts now. Log A, image file. Are you sure? Yes. Is that the final answer? Yes. So let's see. Yes, you're absolutely right. It's option A, image file. GIF is a digital image file which was devised in 1987. So now let's disclose the scores of round 1. Team A with 10 points, Team B with 10 points, Team C with 10 points, and Team D with 10 points. Wow, you all have played really well. But now let's move towards our round second. Let's begin with our round 2. So the first question of round 2 goes to Team A. Are you ready? Yes. So here's your question. Which of the following is a search engine? I repeat, which of the following is a search engine? And here are your options. Option A, Chrome. Option B, Firefox. Option C, Bing. And option D, Internet Explorer. And your time starts now. We want to lock option C, Bing. Are you sure? Yeah. So let's see whether it is correct or not. Yes, you're absolutely right.
Bing is the fastest search engine and it is owned and operated by Microsoft. Now let's move towards Team B. Now the question for Team B is, which programming language is used for making applets? Your options are A. C++, B. COBOL, C. PHP, or D. Java. And your time starts now. Java. Are you sure? Yes. So is it a guess or you have read it somewhere? I have read it somewhere. Okay, let's see. Yes, you're absolutely right. It's Java. So now the next question is for Team C. Are you ready? Yes. So here's your question. How many bits make a byte? And here are your options. Option A, 7. Option B, 8. Option C, 9. And option D, 10. And your time starts now. It's option B, 8 bytes. Are you sure? Yes. Would you want to lock it? Yes. So let's see whether it is correct or not. Yes, you're absolutely right. It's option B, 8. Most commonly in a byte, there are 8 bits. Now the question is for Team D. Are you ready? So here's your question. Mac operating system is developed by, and your options are A. IBM, B. Apple, C. Microsoft, or D. Samsung. And the time starts now. Please lock option B, Apple. Are you sure? Yes, I'm sure. Is it a guess or you have read it somewhere? It was a guess. I was confused between Microsoft and Apple, but I want to go with option B. Let's see. So your luck is with you today. It's the right answer. Very good, Team D. So let's disclose our points for round 1 and 2 combined. So Team A with 20 points, Team B with 20 points, Team C with 20 points, and Team D with also 20 points. Wow, you all have played really, really well. But don't be too happy because we have our round 3. It's gonna be a buzzer round, so you have to be quick and wise. So now let's see what are the rules of buzzer round. The first team to press the buzzer is the team who is going to answer, and if it be a correct answer, it's going to be plus 10 points. If it's going to be a wrong answer, it's going to be minus 5 points. So is everyone ready? Yes. So let's begin with our round 3rd. So the question of buzzer round, question number 1 is, the father of artificial intelligence is Alan Turing, option 2, Charles Babbage, option C, John McCarthy, option 4, none of the above. Option Team A. Please lock option C, John McCarthy. Let's see. Yes, you're absolutely right. Now let's move with our second question. How many category processes is artificial intelligence classified in? Option A. Oh, you have pressed really well. Well, what's your answer? Please lock option 2, 3. Are you sure? Yes. Let's see. Yes, you're absolutely right. It's option 2. So now let's see what's the third question. Which of the following is the common language for artificial intelligence? Please lock third option, Python. Yes, you're absolutely right. Now let's move to our fourth and last question. How does an AI agent interact with its environment? Option A, using sensors and perceivers. Option B, using sensors only. Option 3, using perceivers only. Or option D, none of the above. Please once repeat the options. Yeah, sure. Option A, using sensors and perceivers. Option B, using only sensors. Option 3, using only perceivers. Or option D, none of the above. Please lock option first, sensors and perceivers. Oh. Are you sure? Let's see. Yes, you're absolutely right. It's option A.
It looks like you all have given the right answers. So we don't have a winner for today, we have winners for today. And you all are geniuses of IT as well as information technology. So thank you for joining us in today's quiz. Allah Hafiz. नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह जल्दी हम आपके साथ नए शुमारे में मिलेंगे। और अगर आपका इदारा हमारे न्यूज़ चैनल के ज़रिए अपने बच्चों का टैलेंट एक्सप्लोर करना चाहता है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबरात पे आप संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।